Hello everyone, welcome to my lecture 221। ये इस लेक्चर में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के आईएलडी ड्रा करने की कोशिश करेंगे और इसका हेल्प लेंगे, इस डायग्राम का हेल्प लेंगे। तो हमने एक ओवरहैंग बीम दोनों साइड्स में है जिसके लिए एक आइडियल हमने डायग्राम ड्रा किया है। दिस इज ILD फॉर शियर फोर्स, दिस इज ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट और वो पॉइंट क्या है, ई पॉइंट है। मान लीजिए कोई ई पॉइंट है, अगर इनकी वैल्यूज आप कभी मान लीजिए रख लेते हैं, सपोज करिए कि ये 2 मीटर है आपका, ये 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है और ये 3 मीटर है। इस तरह से सपोज करिए आपका अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं और ई पॉइंट पे आपको शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है, ILD ड्रा करना है, और मान लीजिए कि जो लोडिंग है वो आपकी इस तरह से है, ये लोडिंग आपकी है जो कि 200 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन या 100 किलो न्यूटन का व्हील्स लोड लग रहा है और जिनका जो अपार्ट डिस्टेंस है 0.8 मीटर सपोज करिए है, 0.8 मीटर है। इस तरह का व्हील लोड अगर रन कर रहा है तो इसमें हम नंबर 1 आप फाइंड आउट करो, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना होगा। नंबर 2 मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कितना होगा। नंबर 3 मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा और चौथा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आपका कितना होगा। ये 4 चीजें हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय द डायग्राम। दिस इज द आइडियल डायग्राम फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए आइडियल डायग्राम है जो ओवरहैंग है। अगर इसमें किसी तरह का लोड रन करेगा तो ई के रिस्पेक्ट में शियर फोर्स ILD और ई के रिस्पेक्ट में बेंडिंग मोमेंट का ILD को ड्राई करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। वी कैन यूटिलाइज दीज डायग्राम्स फॉर ड्राइंग द ILD एट ए पॉइंट E फॉर शियर फोर्स एंड एट ए पॉइंट E फॉर बेंडिंग मोमेंट। सो सपोज two loads are given 200 kN, 80 kN apart of 0.8 meter, which runs on this girder D2C, and how will adjust these loads at what point so that we can get the maximum shear force, maximum negative shear force, maximum positive shear force, bending moment, and maximum negative bending moment. These are the questions which we can visualize. Now you see for the maximum shear force which should be there. If you just visualize, just see on this graph, you will find the positive value, this E by L, that is E by L is nothing, that is 2 by 3 is this point, and what is this? This point is 0.5 because this is 1 unit, so this is half, so this is 0.5. And what about this? This is F by L means 3 by 3. This is your unit 1. This will be 1. So your unit is something like that. And what is this? If you come here, this negative portion, this is 1 unit. This is 1 unit. Okay. This is 1 unit. And sorry, this is 1 unit. This is 1 unit. And this is how much? This will be 0.5. Because in the halfway, this is a 0.5. So you observe, try to observe which will give you maximum shear force, where we put the load so that. So you will see this diagram and you can see positive this value also, but it is less 0.5, but this is 2 by 3rd, that is 0.7, 0.66. So this will be your better option to put the loads over here. So you will put the loads 8 D point 200 kN. So you put the load at D point like this. You put the load 200 kN here and 80 kN here.
this is first position, this is 0.8. So 0.8. If you take this diagram outside, you will find like this. This is this way. This is 2/3, and this is your 0.8, and this is your 1.2 meter. This distance, this is y. So 2/3 upon 2 equals to y upon 1.2. So y equals to 1/3 into 1.2, that is your 0.4. So your height will be your here, this will be this height at this point will be 0.4 meter. So you can always find out this maximum shear force. Maximum shear force will be positive shear force will be 2/3 into 200 plus 80 into 0.4. So you can calculate the maximum shear force in this way. So we'll calculate it. This will be 400 divided by 3 plus 32. This is your coming 400 divided by 3 plus 32. 160.5.33. This is positive 160.533 kilonewton. This is your answer for positive. So this is your for positive. This you can take positive. What will be the negative answer? Let us see what will the negative. Please take it. Guaranteed. Please take it. आप दिमाग में रखो इसको. Please आप इसको रखिए. Now you will observe the diagram. आप डायग्राम देखोगे कहाँ निगेटिव माइनस, यहाँ ज्यादा निगेटिव है इस पर, और कहीं निगेटिव आपको यहाँ पर 0.5 दिख रहा है. तो निगेटिव के लिए ये ऑप्शन सही है. तो व्हील का लोड कहाँ होगा? आपका व्हील का लोड यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर. यहाँ पर आप रखोगे 200 किलोन्यूटन और यहाँ पर रखोगे आप 80 किलोन्यूटन. अब आपको इसकी जगह जो है 0.8 है, आप देख लीजिए. तो दिस इज योर diagram, something like this. This is 1 unit and this distance is your 3 meter. So this is your 0.8 and this is 2.2, right? And what is this? Y distance, y, and this is 1 divided by 3 equals to y divided by 2.2. So y is equal to 2.2 divided by 3. This is 2.2 divided by 3 because this is 2.2. So y upon 2.2 is equal to 1 upon 3. So this is 2.2 by 3. Y is 2.3. So what will be the maximum negative value? Maximum negative shear force will be minus, that is 200 into 1 plus 80 into 2.2 by 3. This will be your value. You can always calculate. This is your 80 into 2.2 divided by 3 plus 200. This is 258.67 minus 258.67 kilonewton. So this is your negative value. So in this way you can always find out the maximum positive shear force ILD and negative with respect to this point E. So whatever the location is done given, from that point you have to draw this diagram, ideal diagram, and according to this you can solve the maximum shear force. So this is for the shear force. Likewise, I will take up in the next video the maximum bending moment. So thank you for being with me. Thank you very much for all of you.